right? So surface integration deals with surface S, which should be a solid. Of course, it should be a solid, right? It should not be a fluid surface. ऐसा नहीं है कि जो पानी की जो ऊपरी सतह है वो आप ले लें, नहीं, पानी की सतह नहीं लेनी, हवा की सतह भी नहीं लेनी है, राइट? आपको जो सरफेस लेना है दैट शुड बी अ सॉलिड सरफेस जिसको आप टच कर सकें, राइट? और सॉलिड होना चाहिए, फ्लूइड नहीं होना चाहिए, ओके? तो S इज अ सॉलिड ओरिएंटेबल सरफेस। ओरिएंटेबल सरफेस, ओरिएंटेबल का मतलब होता है एक रफ मीनिंग है ओरिएंटेबल का मतलब है टू साइडेड, एक ऐसा सरफेस जिसकी दो सतह होती हैं, दो साइड्स होती हैं, राइट? और उस सरफेस की इक्वेशन ऑफ कोर्स होगी फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू 0। अगर वो थ्री डायमेंशनल सरफेस है, ऑफ कोर्स सरफेस 3D ही होगा, राइट? Placed inside a uniform vector field F, right? तो देयर शुड बी अ वेक्टर फील्ड। सबसे पहले तो जरूरी है कि उस स्पेस में जहां पे भी आप उस सरफेस को रख रहे हैं देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड कैपिटल F, right? And the surface should be an orientable surface, a two-sided surface whose two sides can be colored differently with two different colors. So this is a complete definition of orientable surface. A surface capital S is said to be orientable if its two opposite sides can be colored with two different colors, right? Those surfaces are called orientable surfaces, right? Okay. नाउ लेकिन ये आपसे मेरा सवाल है कि क्या ऐसी भी कोई सरफेस हो सकती है कि जिसकी नॉन ओरिएंटेबल सरफेस हो सकती है जिसकी साइड्स जो दो साइड नहीं होती हैं, जिसमें क्या आपको ये सुनने में अजीब नहीं लग रहा? सरफेस होगी तो दो साइड होगी, ऊपर वाली साइड एक नीचे वाली साइड। पेड़ का पत्ता होता है उसकी भी दो साइड होती है, रेक्टेंगल कोई भी रेक्टेंगल ले लीजिए उसकी भी दो साइड होती है, ऊपर वाली नीचे वाली। तो आपको लगता है ऐसा भी कोई सरफेस होता होगा कि उसकी एक ही साइड होती होगी? इज इट पॉसिबल? हु विल टेल मी? सर्कल, नो, सर्कल इज अ कर्व ना, सर्कल को बीच में से भरना पड़ेगा आप, सर्कल तो नहीं, सॉलिड ना, ऑफ कोर्स स्फीयर सॉलिड लेंगे बट ओके, हाँ राइट, सॉलिड स्फीयर, या दिस इज करेक्ट, सॉलिड स्फीयर। अगर स्फीयर सॉलिड होगा, अंदर से भरा हुआ होगा, तो आप उसकी एक ही सरफेस है और उसको आप पेंट करेंगे तो एक ही पेंट हो जाएगा, अंदर आप पेंट नहीं कर सकते बिकॉज इट्स सॉलिड स्फीयर। अगर हॉलो स्फीयर होगा देन ऑफ कोर्स यू कैन पेंट द इनर सरफेस विद अ डिफरेंट कलर, राइट? So we are talking about two-sided surface, and that's why we called it orientable surface. We are not talking about solid surfaces like cylinder surface, like sphere surface. ऐसी surface की बात नहीं कर रहे हैं. We are talking about sheet actually. Sheet की तरह होते हैं जो पतली सी चादर होती है जिसका ऊपर और नीचे का सरफेस होता है, राइट? और हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है कि पतली सी चादर हो लेकिन उसकी दो सरफेस ना हो, तो वो पिक्चर भी आपको देख लेना चाहिए। नीचे जो पिक्चर बना रखा है दिस इज कॉल्ड मोबियस स्ट्रिप कहते हैं इसको, और अपने घर में भी ये बनाई जा सकती है, घरेलू सामान से बन जाती है। आपको इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, ये ऐसे बनाई गई है। टेक अ पीस ऑफ पेपर लाइक दिस, ऐसे पेपर काटिएगा रेक्टेंगल की फॉर्म में, काट लीजिएगा, बाद में काटिएगा। इस एंड का नाम है A, दिस इज B, this is C, and this is G, right? So this is a piece of paper cut in the shape of rectangle, right? Now what you do, you just switch these two ends. I mean, you just twist this paper so that the D end comes here and C end comes here, leaving that left to corner same, right? So this is the new position, but when you do this twist there will be a fold like this. So I will make a line like this, a kind of fold will appear here, right? कुछ ऐसा fold आ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके का कुछ fold आ जाएगा, a kind of fold, right? I cannot show here in picture, but if you do it at your home, you will see that when you switch these two ends, मैं 180 डिग्री का स्विच मारिएगा ऐसे, इस तरफ से कागज को यहाँ से होल्ड करिएगा और 180 डिग्री घुमा दीजिएगा। जब आप इसको 180 डिग्री घुमाएंगे ना तो सी एंड नीचे आ जाएगा और डी एंड ऊपर आ जाएगा, और चुपचाप से फिर इनको चिपका देना, बी से चिपकाना ए को और सी से चिपका देना बी को यूजिंग अ ग्लू, राइट? जब आप चिपकाएंगे देन यू विल गेट दिस पिक्चर, ऐसी स्ट्रिप बनेगी। आप बना लीजिएगा उसको घर में, क्या आप बना लेंगे इसको क्लास के बाद, ठीक है? और फिर उसमें कलर करिएगा, कलरिंग स्टार्ट करिएगा। तो जब आप कलर स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी कलर स्टार्ट करेंगे उसकी सरफेस पे, तो आप पाएंगे आप कलर करते चले जाएंगे तो पूरी स्ट्रिप में एक ही कलर हो जाएगा, ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे, दो कलर आप नहीं कर पाएंगे। ये मेरा कहना है कि ऐसे सरफेस की हम बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज नॉट
एन ओरिएंटेबल सरफेस, ये नॉन ओरिएंटेबल सरफेस है। हम डील करेंगे सरफेस इंटीग्रेशन में ओरिएंटेबल सरफेस से, यानी ऐसे सरफेस जिनकी दो सरफेस होती हैं, ऐसे सरफेस जिनकी जिसको दो डिफरेंट कलर से कलर किया जा सके, हम उनकी बात कर रहे हैं। नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इंक्लूडिंग सोनू? यस सर। ओके फाइन। अच्छा सोनू ये बताओ, ये क्या, इस पिक्चर को, जो पिक्चर आपको दिख रही है, जो शीट बना रखी है, कुछ कागज का टुकड़ा है शायद, कुछ है ये, इसके कितने सरफेसेस आपको, एक तो नजर आ रही है ब्लू कलर और एक नजर नहीं आ रही है नीचे वाली, यस और नो? यस सर। क्या आप इसको दो डिफरेंट कलर से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यस कर और नो? सकते हैं ना सर? कर सकते हैं। तो एक तो मैंने करी रखी है, दूसरी मैंने करी भी होगी तो आपको दिख नहीं रही है, राइट? तो हम ऐसे सरफेस की दिस इज बात एन करेंगे। कैप, ये नॉर्मल है सरफेस का, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज एक्चुअली 90 डिग्री एंगल, राइट? एंड दिस इज यूनिट नॉर्मल। ये कैप लगा रखा है, दिस कैप का भी अपना मतलब है। आप जानते हैं किसी भी सरफेस, अगर सरफेस का इक्वेशन फाई इक्वल टू 0 है तो उसका नॉर्मल होता है ग्रेडियंट फाई, यू नो दिस थिंग। सो नॉर्मल ऑफ दिस सरफेस विल बी ग्रेडियंट फाई, but you need to convert that into a unit vector, so that's why you are dividing it by its magnitude. So that's why it is now a unit vector which is normal to the surface, right? You all know that normal to a given surface phi equal to c is given by gradient phi, right? Okay, so this black colored arrow indicates the unit normal to the blue colored surface, and this is outward normal. Basically we can have two normals actually. One normal can be drawn in this direction also, but we are not interested in the normal which is pointing inwards. We are interested in the unit normal which is pointing outward from the surface, right? Okay, now can you see this red color patch here? This is a red color patch here, right? This is a small patch and it will be having area equal to ds, right? And it is called elementary area ds. Okay, okay, fine. So this is elementary area, sorry, where is that? Elementary area ds, right? And can you see that this whole sheet has been projected on xy plane? This is the projection, gray colored projection of or you can say that this is a shadow. A projection is nothing but it's a shadow, right? Shadow of this object, blue colored surface on xy plane, which is looking like a rectangle here, right? And see this red colored square, right, which is actually the projection of this red colored patch here, right? This patch was having area equal to ds, right? And its projection is now having area equal to dx dy. So it's written here, projection area dx dy of ds, right? Note that this is a square, right? Or it may be a rectangle, but this square or rectangle is made on xy plane, so that's why it's all the edges are straight edges, while this is not a rectangle, of course, or this is not a square, because you can see that there's a curvature of this edge is curved, like, and this edge is also curved, right? So the edges are curved, so that's why it is not a perfect square or rectangle, right? That's why projection is required. प्रोजेक्शन में ले ही इसलिए रहे हैं कि एक तिरछी, एक टेढ़ी ऑब्जेक्ट है, उसका एरिया कैसे निकालोगे आप? आपको एक सीधा मैं कागज दे दूं, स्ट्रेट पेपर जैसा होता है, उसका आप एरिया निकाल लेंगे, लेंथ इनटू डेप्थ। लेकिन अब कागज को फोल्ड करके दे दूंगा मैं, अगर मोड़ के दे दूंगा, झुका के दे दूंगा, तो आप उसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो यू हैव टू प्रोजेक्ट दैट object which is somewhat curved onto some plane so that its image get straightened up, जिससे उसकी इमेज एक सीधी इमेज मिले। तो ये मजबूरी होती है। कर्व्ड जब चीजें होती हैं, तो जैसे मैं आपको पत्ता दे दूं, लीफ, तो लीफ जो होता है वो लटका हुआ होता है, गोल थोड़ा घुमा हुआ होता है, कर्वेचर होता है उसमें, तो उसका एरिया निकालना मुश्किल है, उसका प्रोजेक्शन हमको करना पड़ेगा, तब आप उसका एरिया निकाल पाएंगे। तो इसीलिए जो डीएस, जो एलिमेंट्री एरिया था, इसका प्रोजेक्शन लिया गया ऑन एक्स वाई प्लेन, राइट? एंड नाउ इट्स एरिया dx dy। लेकिन अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि सरफेस इंटीग्रेशन होता क्या है। मैंने तो आपको सिर्फ ये बताया कि सरफेस इंटीग्रेशन करने के लिए जरूरी होती है एक फील्ड। क्या आप देख पा रहे हैं, ये डॉटेड लाइंस दिख रही हैं, 1 2 3 4, ये 4 लाइनें आपको दिख रही होंगी। मैंने फील्ड की लाइन से मैंने कहा था कि जो भी हम काम करेंगे दैट विल बी अंडर द इफेक्ट ऑफ सम फील्ड। सो दिस सरफेस इज प्लेस्ड इनसाइड सम vector field, right? So do not forget the vector field. Okay, now the surface integral is defined as this double integral. We generally write capital S here. This capital S is actually the name of the surface. Whatever is the surface here, you name it by capital S, right? And then vector F, which is given, and this is a dot here, right? Dot n cap.
n cap is nothing but it is the unit normal to the surface, and then we write ds here, right? Is it clear to all of you? Okay. Or in some textbooks, they generally skip this double integral. They just write one single integral and write s and this f dot ds vector. So this is a kind of area vector. So in some textbook you will see this, but we will follow this notation, right? I'm just telling you that if you see this is the same thing as this one, right? Okay. Now, what is n cap? I have already told you that n cap is nothing but it is a unit normal to the surface. And how will you find that unit normal? You will find gradient phi. You all know how to find gradient phi. And then you, after finding that gradient, you will just divide that by its magnitude actually, right? So you will be getting n cap. So this is an important part. In order to evaluate a surface integral, you need to evaluate n cap, right? Okay, fine. Now what happens? As I told you that this elementary area, this red colored patch, will be will be projected onto xy plane, and then you will get dx dy, right? And but when you do such projection, there will be some balancing of factor, area factor, and that is compensated by dividing this by modulus of n dot k. So if you are taking projection on xy plane, then you will be replacing ds by dx dy. Can you see this? My marker is not working again. Ds will be replaced by dx dy divided by modulus of n dot k cap. And why n dot k cap? Because can you see that this k cap vector here, this k cap vector, this one, right? This k cap is at 9 degree to this projection area, gray colored area, right? So if you take projection on xy plane, then k cap will be the unit normal, and then on in the denominator you will be writing modulus of n dot k cap. And if you take projection on yz plane, then you will be writing ds will be replaced by dy dz divided by modulus of n dot I cap, and then the third is for xz plane. Yes, please ask. सर के कैप सिर्फ प्रोजेक्शन के लिए होगा ना सर? हाँ जी, के कैप सिर्फ प्रोजेक्शन के लिए होगा ना सर? कर्व के लिए ऊपर वाला नहीं होगा? हाँ, कर्व के लिए नहीं है के कैप, ये प्रोजेक्शन के नॉर्मल जो होगा, क्योंकि प्रोजेक्शन या तो एक्सवाई प्लेन में आएगा, या वाईजेड प्लेन में आएगा, या जेड एक्स प्लेन में आएगा, और डिपेंड करेगा कि पिक्चर कैसा। अभी पिक्चर ऐसा है तो परछाई इसकी नीचे पड़ेगी ऑफ कोर्स। अगर वो पिक्चर ऐसा होता है, ऐसा होता तो मैं परछाई इधर ले लेता है इसकी, राइट? तो उस केस में फिर जो परपेंडिकुलर आता है वो वाई कैप आता, मतलब सॉरी जे कैप आता। अभी ये जो उसका परपेंडिकुलर है, ये जो मैंने बनाया है, जो आप देख रहे होंगे ये वाला, ये किसके पैरेलल है? ये जेड एक्सिस के पैरेलल है, यस और नो? इसीलिए के कैप आया, ठीक है? तो ये तीनों केस दे रखे हैं। अगर जो पिक्चर में दिया है उसके हिसाब से करोगे तो डिनोमिनेटर में n डॉट के कैप आएगा, और अगर आप वाई जेड में प्रोजेक्शन लेंगे तो डिवाइड में ये आएगा, और अगर आप एक्स जेड में प्रोजेक्शन लेंगे तो अपॉन में ये आएगा, और ऊपर भी चेंज हो रहा है, ऊपर फिर dx dz आ रहा है। जिस प्लेन में आप प्रोजेक्शन लेंगे, आप खुद सोचिए, ये मैंने प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में लिया था, तो इसका एलिमेंट्री एरिया कितना है? dx dy। अगर ये प्रोजेक्शन, ये रेड कलर का पैच जो होता है वो इधर बनाते आप यहाँ पे बनता अगर ये, तब इसका एरिया कितना होता? व्हाट विल बी द एरिया? dx dz, यस और नो? dx dz, and the normal will be like this, normal होता j cap, तो फिर उस केस में ये आता, राइट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ये मैंने गलत लिख दिया, देखिए यहाँ k नहीं आना चाहिए, j आना चाहिए था। दिस शुड बी j एक्चुअली, j। कृष्ण कंडारी, मिस्टर के, यस मिस्टर के, प्लीज आस्क। यही था डाउट कि यहाँ पे के क्या बना है। हाँ बिल्कुल, जो तुम्हारा डाउट था वो यहीं पे सही हो चुका है, ठीक है, गुड। एक चीज, हाँ एक चीज कृष्ण कंडारी, मैं तुम्हारी मदद से बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्शन लिया जाता है, आपको क्या लगता है कि इसकी जो परछाई है, जो शीट जो पिक्चर में बनी हुई है, इसकी परछाई क्या यहाँ नहीं पड़ेगी? इस वाले प्लेन में ली जा सकती है इसकी परछाई? नीचे क्यों ले रहे हैं, इधर ले सकते हैं क्या? सर पर ये एक लाइन में आएगा ना फिर? वाह क्या बात है। और अगर इस प्लेन में ले लें, वाईजेड प्लेन में ले लें इसकी परछाई, तो वो भी एक लाइन आएगी, वो उसमें ही आएगा, चलो लाइन में आएगा। ठीक है। चलो एक बार, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। एक बात बताना कृष्ण कंडारी की, मान लो देर तो नहीं हो रही कहीं जाने की? नहीं सर। हाँ तब ठीक है। कंडारी को यहाँ बैठा देते हैं, उनके हाथ में दे देते हैं गन, एक बंदूक, लेकिन बंदूक में गोली नहीं डालेंगे, असली बंदूक नहीं देंगे आपको, नकली वाली बंदूक देंगे। ऐसी बंदूक जो बच्चे जिससे खेलते हैं, जिससे बस कागज में छेद हो जाता है, वो वाली बंदूक, राइट? क्योंकि डेंजरस चीज है। यस तो सर। ये छाता बना दिया, अब तो ठीक है ना?
हाँ सर अब ठीक है। तुमने अब ठीक है, यहाँ बैठ के फायर करना, कितने छेद हो जाएंगे? 2। सर 2 हो जाएंगे। और यहाँ बैठना, जरा वाईजेड प्लेन में बैठना, यहाँ कहीं सर बैठ 2 हो के मारो जाएंगे सर। गोली। 2 हो जाएंगे। नीचे बैठ के मारोगे तो 1 होगा ना। यस सर। तो जहां से फायर करके एक होल होता है सरफेस में, वो प्रोजेक्शन करेक्ट होता है। ठीक है, फ्लक्स निकालना है। ओके और सर। हाँ, ये फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन में बताना भूल गया था। फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसका ये है कि ये नेट फ्लक्स दिखाता है, आउटवर्ड फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट सरफेस नॉर्मली, राइट। सो जब ये निकालते हैं, इसका आंसर जो आता है वो फ्लक्स होता है असल में। तो किसी सवाल में लिखा हो फाइंड द फ्लक्स, तो समझ जाना कि डबल इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन करना है। लेकिन सरफेस इंटीग्रेशन करने के लिए फील्ड तो देना जरूरी है। इस क्वेश्चन में तो फील्ड दी नहीं है, तो फील्ड तो होनी चाहिए कुछ ना कुछ, हाँ या ना। इन द वेक्टर फील्ड F equal to 18z I cap minus 12 j cap plus 3y k cap, राइट। ओके, तो पिक्चर बनाना चाहिए हमको, क्योंकि भाई सवाल है कि आपको समझाना भी तो है। तो पिक्चर, एक अच्छी पिक्चर होना बहुत जरूरी है, निहायत ही जरूरी। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पिक्चर। सॉरी, ये उल्टी बन गई। वाई एक्सिस तो ऊपर होती है। दिस इज, सॉरी, जेड एक्सिस, नॉट वाई एक्सिस। दिस इज जेड एक्सिस, राइट। एंड that's fine. Y axis, x axis, राइट। और अब मैं बनाने जा रहा हूँ ट्राइंगल, जो कि ये ट्राइंगल प्लेन है, दिख रहा होगा आपको। इसका इक्वेशन आपको नजर आ रहा है। लेट मी राइट इट्स इक्वेशन लाइक दिस। प्लेन is, if you divide this whole equation by 12, you'll be getting x upon 6 plus y upon 4 plus z upon 2 equal to 1, which means that on x-axis it will be having an intercept of x. वन शॉट टू करेक्ट प्रोजेक्शन कौन सा होगा? तीनों प्लेन में होगा। अभी बनाने दो, पहले पिक्चर बनने दो, फिर पूछेंगे आपसे। y एक्सिस में 4 यूनिट्स और z एक्सिस में 2 यूनिट्स काटना पड़ेगा। तो अंदाजे से, क्योंकि ये वाली जो एक्सिस है ये मेरी y एक्सिस है, दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, तो मेरा अंदाजा लगा रहा हूँ कि z में 2 यूनिट होना चाहिए। तो मान लीजिए ये 2 है, दिस इज 2, राइट। y यूनिट्स में 4 होना चाहिए, तो 4 लगभग इतना होगा, डबल इसका 4। एंड x यूनिट्स में 6 होना चाहिए, तो इसका तिगुना, 1 2 3 6, लाइक दिस। सो देयर विल बी अ प्लेन लाइक दिस। ओह, एक एक करके जोड़ना पड़ेगा। दिस, सॉरी, now it's fine. Another edge, and here is another edge. This is a triangular plane which is intersecting this x-axis at the point 6 0 0, y-axis at the point 0 4 0, and z-axis or z-axis in modern English 0 0 2, right. And since it's a 3D picture, so you will not be able to actually see this these coordinate axes from, so that this point it will give you a view from your side, something like this. Okay, okay, oh, this is original. Now can you see that this is the surface as they are talking about? I will just make few lines on this surface like this. This is the surface they are talking about, right? And of course it's a two-sided surface. Very good, Shikharuprati. It's a two-sided surface, right? दो सतह हैं इसकी, एक वो सतह जो आपको दिख रही है और एक वो सतह जो नहीं दिख रही है, अंदर की तरफ है। तो ये है सरफेस S, ठीक है। और देखिए ये मैंने फील्ड यहाँ पे लिखी थी, वो मुझे दोबारा लिखनी पड़ेगी। एंड यहाँ एक्सिस के नाम भी दे देते हैं, y एक्सिस, दिस इज z and this is x. Okay, now we'll save it. Now Santani Biswas will join us today. Santani Biswas. Santani. Yes, sir.
Okay, fine. Now, please see the theory that the first thing we are going to do, we are going to find this n cap actually. And see the formula of n cap, this is involving gradient phi, and then we'll divide it by its magnitude. Do you know how to evaluate gradient phi? Do you know what is the surface here? Surface, this is surface or this is surface? What is the surface? This is a field, no? Where is the surface? This is the surface. So No? 2x. Yes or no? Yes. Okay, good. 2x plus 6y. Sorry, 3y, sorry. Plus 6z. Can I write this as minus 12 equal to 0? Is it fine? 0. Yes or no? Yes, sir. Can we name it as phi, because the surface has to be given some name. That's the name is phi as per the theory. They have given the name phi equal to 0 for surface. So you should name that plane as phi. Okay, this is fine. Is it fine? Yes, sir. Now can you find gradient phi for me? Gradient Yes, phi. sir. With respect to x, we will derive it. Okay, not just with respect to x. I will write del phi by del x, and then j times del phi by del y. Sorry, this is phi, and then k cap del phi by del z. Okay, so please differentiate it with respect to x partially. What will be your answer if you differentiate it with respect to x? What will be that? 2, sir. 2. 2y. 2y cap. Good. With respect to y? 3. Okay. With respect to z? 6. 6. Okay, good. So you have found that gradient phi, but we need to find this thing actually. See, gradient phi divided by its magnitude, then it will give me n cap. So I will be finding the unit normal. You call it unit normal, right? Then unit normal to surface phi equal to 0 is, you can just skip this thing, or surface is already assumed as phi, is given by n cap equal to gradient phi divided by the magnitude of the vector, which we are writing in the numerator actually. So what is gradient phi? That is 2i cap. Can you convert this vector into unit vector? Do you know how to convert a given vector into a unit vector? Sir, divided by magnitude. Okay, 2 square plus 3 4 square. plus 9 plus 36 ka whole root. Okay, so I think that will be 7 as Sonu Singh evaluated that. So that will be 2i cap, 3j cap plus 6k cap divided by 7. So this is the final value of n cap. So the first step has been finished now. Now we are going to do one of these steps. Either you are taking projection on xy plane or on yz plane or on xz plane. It is up to you. Okay, Santani? Fine? Yes, sir. Santani? Now tell me the correct plane on which this triangle should be projected, and note that logic, the firing bullet logic. If you fire a bullet from the plane on which you are projection, then on which plane you should be taking projection. If you take its projection on xy plane, I'm asking you, Santani, if I take its projection on xy plane, then will that projection be correct or complete? Imagine yourself that you are sitting on xy plane and you are holding that kid's gun, right? And then you will fire a bullet in upward direction. How many holes you will be having in this surface if you fire a bullet starting from xy plane? 1, sir. One plane. Okay, so we conclude that we can take projection on xy plane because we are having only one hole. Can we take its projection on xz plane also? एक ही होल होगा. अगर आप यहाँ भी बैठेंगे, you just fire a bullet like this, then it will make a one hole. One होगा. कार्तिक वशिष्ठ imagine कर लेते हैं चीजों को. ये मैंने आजमाया है. बिल्कुल सही है, एक ही होल होगा. और इनफैक्ट अगर आप yz plane में भी बैठेंगे and then you fire a bullet, then there will only be a single hole. In fact, any projection is correct. इस क्वेश्चन में आप यू कैन टेक प्रोजेक्शन ऑन एनी प्लेन, जो लेना है लीजिए, आपकी इच्छा है, राइट? ये तीनों में चल जाएगा. दिस सरफेस इज गुड सरफेस. दैट प्रोजेक्शन कैन बी टेकन ऑन एनी प्लेन बिकॉज इट्स लाइक टिल्टेड, ने टेढ़ा कर रखा है इन्होंने. अच्छी बात ये, अगर ये ट्राइंगल ये खड़ा कर दें, हम इसको सीधा स्ट्रेट ट्राइंगल बना दें, ऐसा करके कर दें, देन प्रोजेक्शन फिर तो एक ही प्लेन में लेना पड़ेगा. लेकिन ये तीनों में बराबर टिल्ट हो रखा है, तो तब यहाँ पे प्रोजेक्शन तीनों में सही आ रहा है. खैर, if Santani, you are comfortable in projecting this triangle on xy plane, then it's fine, no problem, क्योंकि projection तो एक में लेना है. Should I color the projection, Santani? Yes, sir. कर दीजिए.
चलिए कर दिए, ग्रे कलर कर दिया हमने प्रोजेक्शन में। और बताइएगा कि व्हाट दिस प्रोजेक्शन इज लुकिंग लाइक, क्या है ये शेप, जो प्रोजेक्शन जो आया है क्या शेप है, व्हाट इज दैट, सर्कल, रेक्टेंगल, नहीं, राइट एंगल्स। right angle triangle, good. हाँ, So we have to make that triangle separately actually, right? Separately बनाना पड़ेगा हमको. Now it's colored. Okay, fine. And we'll just name this corner as origin. This is origin O, right? This corner. Okay, fine. Now what I will do, I will just computed n cap, and I will write the line which Anthony just advised me to take the projection of surface. Surface is that plane surface on xy plane as Anthony suggested, though we can take projection on any plane in this question, right? So since we are taking projection on xy plane, so this should be followed. Dx should be replaced by dx dy divided by modulus of n dot k. So I'm just copying the thing. Hence, Anthony, where are you? yes sir. So ds will be replaced by dx dy divided by modulus of n cap dot k cap. I have just copied that first case formula. Is it fine? This one? Yes sir. Okay. Okay. Now please tell me the value of this thing n dot k. Can you see this n cap? Can you do this? Oh, some guessed, I think. Yes. Okay, no problem. dx dy डिवाइडेड बाय, जस्ट डॉट करिए इसका के कैप के साथ, कौन करेगा, के कैप के साथ डॉट कितना आएगा इसका 6/7, and then you are having modulus. This modulus is to assure that you are having a positive sign, और luckily ये positive sign ही आ रहा है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव भी आता तो मैं पॉजिटिव कर देता उसको. So eventually it is 7/6 dx dy. Fine. Now we are in position to evaluate the surface integral, that is double integral. Actually we are required to find the flux, so I will write something like this. Therefore the outward flux is double integral s f dot n cap ds is equal to, now please pay attention, double integral, and since we have taken projection onto xy plane, so I will be writing here like this. See, this triangle is nothing but its projection r, right? So this is projection r. So what we will do, we will just replace this s by capital R, right? And now I will put f dot dn. The value of f was given in question. It was 18zi minus 12j plus 3y k cap, and then dot, and the value of n cap, is, where is that n cap, this is n cap, so 2i plus 3j plus 6k upon 7. Fine. Now ds will be replaced by 7/6 dx dy, so that will be 7/6. इजी होता, मे भी हो सकता था, हाँ शायद उसमें कांस्टेंट, हाँ हो सकता था, बिल्कुल हो सकता है, इंटीग्रेशन इजी हो सकता है, फिलहाल तो अब मैंने ले लिया, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट, ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, right? Dx dy. So this is the, now you can see that you need limits of x and y because your region R is on xy plane. आपको z अब नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि z मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, चलिए बाद में देखेंगे. 7 is cancelled with this 7 actually, so you will be having 1/6 outside, and can do the dot of these two things, that gives you 18z into 2, that gives you 36z minus 36, because this into this is 36,
and then 3y into 6, then if you dot them you'll be getting 18y, and then dx dy, right? And now you are going to get rid of this z actually, because you are going to integrate with respect to x and y, right? So you don't need z actually. z आपको हर हाल में हटाना ही पड़ेगा, z हटाना पड़ेगा. z हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्लेन की इक्वेशन को यूज करना है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. यहां से आप z की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट? Okay, so what I'm going to do, I'm going to just replace this z by, I will write it here, r, double integration r 36 times z, and the value of z will be 6z is 12 minus 2x minus 3y, so that will be 12 minus, no, yeah, 12 minus 2x minus 3y, 12 minus 3x minus, no, not 2x, 12 minus 2x minus 3y upon 6, and then minus 36, and then plus 18y, and then dx dy. Okay, now we can just write the value, that was 6 into 6, 36, 6 into 6, 12 into 6, 72. So 72 minus 36 is 36, and then 6 into 6, 6 minus 12x, and then minus 18y, that will be cancelled with this thing. I think now this is also easy. This is not too much complicated. Yes or no? We can always, but we need the limits of x and y, and in order to do that I will be taking this projection, this triangle projection here again. एक बार और picture बना लेते हैं, लेकिन that will be a 2D picture. This is y axis, x axis, right? And y, right? Can you see this triangle, right? 6 and 4. Okay, fine. So maybe making the triangle like this. Okay, so this point is capital A. This was 6, 0. We are not going to write the 3 tuple now. Third वाला हटा दीजिएगा. And this is 0, 4. Yes. सोनू सिंह, लिमिट आपने बता दी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें लिमिट पूछनी पड़ेगी किसी से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. लिमिट निकालना किसको याद करें हम? अमन तोमर को याद करते हैं. अमन तोमर, मिस्टर तोमर, लिमिट्स निकालने के लिए कैसी स्ट्रिप बनाऊं? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या दोनों चल जाएंगी? चलो वर्टिकल, वैसे दोनों चल जाएंगी, दोनों ही चल जाती हैं फिलहाल. चलो तुम कह रहे हो तो वर्टिकल बना देते हैं. चलिए, स्ट्रिप का बेस किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है? y इक्वल टू 0. स्ट्रिप का हेड किसके नीचे? आप ये असल में ये जो लाइन है, ये ए बी वाली जो लाइन है, ये दरअसल वो लाइन है जहाँ ये प्लेन की इक्वेशन है, लेकिन z को 0 पड़ेगा. हाँ, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है असल में. तो वहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस कितना, 2x अपॉन 3. प्लेन की इक्वेशन से निकाला क्योंकि वो टच कर रहा है, z0 है यहाँ पे. और ये तो था, खैर आपने बनाया. और मोशन भी देखना पड़ेगा, मोशन होगा लेफ्ट से राइट. ये सब पुरानी चीजें जो पिछली यूनिट में आपने करी थी. मोशन स्टार्ट होगा x इक्वल टू 0 से और खत्म होगा x इक्वल टू 6 पे, राइट? तो मुझे उम्मीद है कि ये लिमिट आपको पता होनी ही चाहिए, राइट? सो 1/6. कांस्टेंट लिमिट्स हमेशा बाहर आती हैं. x की लिमिट 0 से 6 और y की लिमिट्स 0 से 12 माइनस 2x अपॉन 3, राइट? सो 36 माइनस 12x. ध्यान रखिएगा कि इस पोजीशन पे जब आप यहाँ पहुंचे,
इस स्टेप में आप वेक्टर छोड़ चुके थे, यहाँ कोई वेक्टर आ ही नहीं रहा है असल में, तो आप पुरानी सेकंड यूनिट में चले गए हैं। तो इन क्वेश्चंस में आपकी सेकंड यूनिट के कंसेप्ट भी रिवाइज होंगे, यूज होंगे, जैसे कि आपने देखा यूज हुआ। ये पिक्चर हम बहुत बनाते थे सेकंड यूनिट में, राइट। ये प्रोजेक्शन आर है, ओके। अब इंटीग्रेशन करना तो सबको आता है, क्या मैं पूरा डिटेल में इंटीग्रेशन करूँ या सीधा इसका आंसर लिख देना चाहिए? लेकिन सीधा आंसर मुझे मालूम भी नहीं है इसका कितना है, इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा शायद। पहले y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो पहले जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दैट विल बी 36 into y, so that gives, बल्कि 36 minus 12x and integration will be y, so y की जगह 12 minus 2x upon 3, right, and then dx, और लिमिट्स x की जगह 0 से लेके 6, 1 upon 6, मुझे लगता है कुछ कैंसिल भी हो जाएगा शायद, 6 से कैंसिल हो जाएगा, so 6 minus 6 in 6 minus 2x and then 12 minus 2x and then 3 can be taken outside here, 0 to 6 dx. Now you have to multiply these factors, फिर इनका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। So तो कैलकुलेशन तो चलिए कोई बात नहीं है, तो हो जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि समझना कि किया कैसे। देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे किया। 2 टुकड़े में करना है क्वेश्चन। पहले टुकड़े में एन कैप निकालना है, जो कि सैंतनी ने निकाल दिया था उनके घर गेस्ट आने से पहले, राइट। और उसके बाद फिर यहाँ ये ds को भी रिप्लेस करना पड़ता है, और फिर इंटीग्रेशन की टेक्निक डबल इंटीग्रेशन की है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, राइट।